Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of class plus one, biological classification. It's the second chapter in class plus one. So, what is biological classification? That means how do we classify this living world exist on this earth? So, what is biological classification? It is diverse classification of living world which has been taken into consideration over a period of time by different scientific authorities and scientists. So, there are so many prominent scientists who have worked hard, who have explored to classify the living world, which is termed as biological classification. So here we have mentioned six scientists who have worked in the past in the field of biology, specifically biological classification. So we would start with our first prominent scientist who have worked in the field of biological classification was Aristotle. And as you know, Aristotle is also known as a father of zoology and father of biology. So Aristotle actually proposed two kingdom classification. That means he categorized this living world in two broad categories or two broad kingdoms, simply as plant or as animals. So he proposed two kingdom classification, and his observations were based on morphological, physical characters of that living species or living organism. So, this was the earliest proposed classification for living world, and it is two kingdom classification, and it was based on observations and the physical character of that organism. So, as I said, he categorized the living world in two broad categories, that is plants and animals. So then he subcategorized plants into tall, shrubs and herbs. He simply said tall means trees. He put trees under the category of tall. Shrubs means small trees or bushy type plants, and herbs means grasses, algae and other small which will look like plants. So he subcategorized this plant kingdom into tall shrubs and herbs on the basis of their appearance. Then he categorized animals on the basis of having red blood or not having red blood. So with red blood animals or without red blood animals. So he categorized on the basis of which did appear before him. So next scientist we have Linnaeus. Linnaeus also proposed two kingdom classification, and his two kingdom classification was based on similarities in physical traits, which whatever do appear before us. That means a plant is tall, the person is means the character of this person, the character of this species, whatever does appear before us about height, shape, size, whatever. So similarities in the physical traits and closely related organisms. So actually Linnaeus' observations were quite similar to that of the observations of Aristotle. So his work was quite similar to that of Aristotle. And the next we have Ernest Haeckel, and he have worked in the field of ecology. You might have heard of him. Ernest Haeckel, he proposed three kingdom classification, and actually in the previous
two kingdom classifications proposed by Linnaeus and Aristotle, they did not mention about single-celled organisms, like unicellular organisms. So they were missing out single-celled organisms, but the Ernest Haeckel first time mentioned about unicellular organisms, and he proposed three kingdom classification with an all new kingdom named Protista. So he was first to give or to propose a three kingdom classification with an all new category, or you can say kingdom, Protista. And he said all the unicellular organisms were to be included in the kingdom Protista. Okay? But there is one exception, means not exception, there is one drawback. There is no specific place for fungi in three kingdom classification of Ernest Haeckel. यानी फंजाई के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस अभी भी नहीं था, ठीक. एंड his observations, यानी observations of Ernest Haeckel on the basis of morphological complexity of that organism, tissue system, means tissue organization, whether is a eukaryote or prokaryote, means a unicellular or multicellular, division of labor, how do they perform their work for their survival, and mode of nutrition, means how do they get energy. Okay, so mode of nutrition, how do they get energy or nutrition from different sources. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that tissue system and mode of nutrition को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था उसको अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर लाया गया था. वो किसने लाया था? अर्नेस्ट हेकल ने. टिश्यू सिस्टम एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये आप ये चीज याद रखिएगा. देन फोर्थ वन वी हैव कोपलैंड. कोपलैंड प्रपोज्ड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. आगे से आगे ये चीजें एक्चुअल में एडवांस होती गई. जो प्रीवियस वर्क था उस वर्क के ऊपर ही जो अगला कोई साइंटिस्ट आया तो पहले उसने उस वर्क को रीड किया, उसमें कुछ खामियां देखी, कुछ ड्रॉबैक्स देखी, तो अपने एक एडवांस वर्क के साथ, अपने एक एडवांस रिसर्च के साथ वो सामने आया. वही चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि सिमिलरिटीज हैं. जो काम अरिस्टोटल ने किया वही काम ऑलमोस्ट लिनस ने किया. लेकिन जब अर्नेस्ट हेकल की बारी आई तो यहां देखिए उसने मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड टिश्यू सिस्टम एंड इट्स अरेंजमेंट के ऊपर भी काम किया. Then we have Copeland. So Copeland proposed 4 kingdom classification and he was first to mention Monera. He was first to mention Monera. So 4 kingdom classifications. So first was kingdom Monera, then kingdom Protista, kingdom Plantae and kingdom Animalia. He actually created a kingdom especially for prokaryotes, especially for unicellular prokaryotes. Okay, and इसके अलावा उसने वही चीज जारी रखी जो अर्नेस्ट हेकल ने काम किया था. इसने सिर्फ एक काम डिफरेंट क्या किया है. He mentioned Monera, means he created a specific kingdom only for unicellular prokaryotes, means Monera. But previously actually he called Monera as Mycota. उसने सबसे पहले उसको Monera नहीं कहा, उसने क्या कहा उनको? Mycota, MYCHOTA. He called them Mycota. उनको जो मोनेरा कहा गया आगे चल के वो किसने कहा? डोवर्टी ने एंड एलेंड. ठीक है. एंड Copeland also included blue-green algae, cyanobacteria. Blue-green algae means most primitive type algae into Monera. But he mentioned fungi or fungi in plants. इसने भी फंजाई को या फंगाई के बारे में अभी भी कंफ्यूज था. इसने फंजाई को किसमें? प्लांट्स में इसने इंक्लूड किया.
तो इसका काम डिफरेंट कैसे हुआ अर्नेस्ट हेकल से? अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले प्रोटिस्टा को यहाँ पे इंक्लूड किया, यानी उसने यूनिसेल्युलर्स के लिए सबसे पहले एक अलग कैटेगरी बनाई प्रोटिस्टा के नाम से। कोपलैंड ने थोड़ा और एडवांस काम किया और उसने क्या बोला, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स के लिए उसने अलग से क्या बना दिया, माइकोटा और मोनेरा। सो मोनेरा as you know included unicellular prokaryotes with the indefinite nucleus and single cell of course, and protista with unicellular eukaryotes। unicellular eukaryotes यहाँ आप शब्द देख रहे हो कि यहाँ पे ये शब्द भी आ रहा है unicellular मीन्स सिंगल सेल, eukaryotes मीन्स ये किसके लिए यूज होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, लाइक ह्यूमन बींग्स एंड रेप्टाइल्स और अदर कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे ये शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? से फॉर एग्जांपल इन प्रोटिस्टा यू माइट हैव हर्ड ऑफ यूग्लिना। सो यूग्लिना in the presence of sunlight can synthesize its own food with the help of the process photosynthesis, and in the absence of sunlight it would behave like an animal, means mode of nutrition will be heterotrophic, but in the presence of light it would behave like a plant, means perform photosynthesis like autotrophs do। यानी ये एज ए एनिमल भी काम कर रहा था, एज ए प्लांट भी, यानी इसके पास डुअल नेचर है, लाइक यूकैरियोट्स की तरह, लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह। इसलिए हम प्रोटिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर, यानी यूग्लिना सिंगल सेल तो है, बट व्हाई यूकैरियोट्स, क्योंकि वो यूकैरियोट्स के कैरेक्टर्स को अपने अंदर वो उसके अंदर पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स के कैरेक्टर्स आपको प्रोटिस्टा में मिलेंगे, चाहे वो सिंगल सेल है, like in case of euglena। Then again plantae and animalia, no difference। बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, कोपलैंड भी फंजाई के बारे में कंफ्यूज था, उसने अभी उनको प्लांट्स में डाला हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव आर.एच. व्हिटेकर, इसके बारे में सभी जानते हैं, एंड अभी तक भी हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं, इसी की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। सो आर.एच. व्हिटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, and he proposed about kingdom Monera, kingdom Protista, and he was first to create a separate kingdom for fungi। So Monera, Protista, fungi, plantae and animalia, and his observations in order to create separate kingdoms were on the basis of complexity of cell structure, mode of nutrition, body organization, means whether it is unicellular or multicellular, and phylogenetic or evolutionary relationship। So he was first to mention this phylogenetic or evolutionary relationship। He was first to take this taken into consideration about this phylogenetic or evolutionary relationship। तो उसने उस एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को भी मेंशन किया अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर। और अभी भी टिल नाउ वी आर स्टिल यूजिंग आर.एच. व्हिटेकर्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मींस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट वन मोर थिंग, एक्चुअली आर.एच. व्हिटेकर सब कैटेगराइज मोनेरा, kingdom Monera, into 2 subcategories, Eubacteria and Archaebacteria। इसको do remember this, that R.H. Whitaker subcategorized Monera into Archaebacteria and Eubacteria। Archaebacteria is the most primitive type of unicellular organism and can survive in the most adverse or harsh conditions on this earth। And about Eubacteria is you can say the most advanced type of bacteria जो भी हम लोग आज उनके बारे में जानते हैं। So at last we have Woos। He proposed 6 kingdom classification। उसने क्या किया एक्चुअल में, आर.एच. व्हिटेकर ने यहाँ पे सब कैटेगरीज बना दी थी मोनेरा की, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इसने उनको अलग अलग ही कर दिया।
कि आर्किबैक्टीरिया एक अलग किंगडम है एंड यूबैक्टीरिया एक अलग किंगडम है. So he proposed 6 kingdom classification: the Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. And his observations was, you can say, was similar, but uh, specifically, actually, he differentiated Archaebacteria from Eubacteria on the basis of genetic expression or the expressions of genes. As we have mentioned over here, differences in 16S rRNA. R means ribosomal RNA genes. 16S means this is a subunit, especially in case of prokaryotes. As you know, in prokaryotes, ribosome is 70S type. 70S type means 50S, which is a large subunit, plus 30S, which is a small subunit. That means this 60S is a part of that small 30S subunit, and there is a difference between a genetic expression when it comes to 16S rRNA in both, in case of Archaebacteria as well as in Eubacteria. इन दोनों में एक जेनेटिक अरेंजमेंट का, एक जेनेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंस है दोनों में. तो उसने इसी के बेसिस पे आर्कीबैक्टीरिया को अलग कर दिया और यूबैक्टीरिया को अलग कर दिया. तो यहाँ पे इसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया. So all the way from Aristotle, Linnaeus, Ernest Haeckel, Copeland, R.H. Whitaker to Woese, all of them have worked tremendously to classify this living world, okay, on their own way. So whenever we talk about Aristotle and Linnaeus and up to Ernest Haeckel, तो हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं, अरिस्टोटल, लिनियस और अर्नेस्ट हेकल. तो इनकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं इट इज आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल वे ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड व्हेन इट कम्स टू कॉपलैंड, आर.एच. विटाकर एंड वूस, तो इनके बारे में हम बोलते हैं नेचुरल वे ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. So in the next lecture we would discuss about R.H. Whitaker as it is mentioned in our syllabus. So in the next lecture we would discuss about 5 kingdom classification, and we would read about Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia in the same unit. Okay, so do revise this and welcome if you have any doubts. So good luck and have a nice day.